I very welcome you all students to this MCGM VTC online lectures for you in lockdown period. So in this today's lesson, students, we are going to learn about 6-digit and 7-digit numbers. In last session we already discussed about 2, 3, 4 and 5-digit numbers. Okay, so let us start. So on your screen, students, here is some work for you, that reading and writing 6-digit numbers. Okay, so we are supposed to remember this, that on your screen the greatest 5-digit number is 99,999. Okay, this is the greatest number. Which number? 5-digit number is. Okay, and when we add 1 to this number, we get the next number, which is 1 lakh. Okay, and 1 lakh is a 6-digit number. Okay, so to write this, one place to the left of 10,000 place, okay, has to be introduced. So here on your screen, students, has a 99,909, and when we add here 1, it will become 1 lakh. Okay, so in the number 1 lakh, the digit 1 is in the lakh place. Okay, so this number is read as 1 lakh or 100,000. Okay, remember this one. So while reading a 6-digit number, first read the digit and the lakhs place, and then read the rest of the 5-digit numbers. Okay, students, so hope you understand how to read the digit of 6-digit number. तो यहाँ पर हम एक बार और हल्का सा इसका रिपीटेशन कर लेते हैं, ताकि आपके जहन में ये महफूज हो जाए. ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं यहाँ पर 6 हिंसी अदद को हम यहाँ पर समझ रहे हैं. तो हमें लिखना और पढ़ना दोनों चीज़ें 6-digit नंबर की यहाँ पर सीखना है. ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 99,999 सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद. ठीक है, ये है. ठीक है, इसमें हम अगर 1 मिलाएं, जैसे स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया, तो सबसे छोटा 6 हिंसी अदद हमें मिलता है. ठीक है, इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि अदद 1 लाख को हम किस तरह से पढ़ते हैं ना, 1 लाख पढ़ते हैं. इस अदद को लिखने के लिए हम 10,000 के मकाम पर बाएं तरफ एक मकाम तैयार करते हैं और इस मकाम को लाख लिखते हैं. ठीक है, ये लाख के मतलब क्या हो गया, 100,000 यानी कि 1 लाख. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अदद जो है, अदद 3,65,274 को हम किस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है, इसे आपको याद रखना है. इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे बच्चों, कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज को आपको यहाँ पर हल करना है. ठीक है, तो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज दी हुई है, देखिए स्क्रीन पर आप. तो ऑन योर स्क्रीन देयर इज एक्सरसाइज, रीड द नंबर एंड राइट देम इन वर्ड्स. ओके, सो हियर इज अ नंबर 765234. So how to read and how to write it?
So this number is 7,65,234. Then second number 4,73,225, 4,73,225. So students, you are supposed to write all these answer in your copy, okay, while you are looking on your screen. Okay, then the next one is 327,001. So that is 3,27,001. Then 8,75,375 means 8,75,375. ठीक है. Then 2,07,203,174, 2,03,174. Thereafter 6,47,851 means 6,47,851. Okay, so like this we are supposed to do this exercise. इस तरह से आपको आगे की एक्सरसाइज भी मुकम्मल करना है. ठीक है, तो ज़रूर से करें बच्चों, काफ़ी आसान है. अगर आप ध्यान दें इस पर तो काफ़ी आसान है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम स्क्रीन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर. ठीक है, फिगर में लिखना है. पहला नंबर है 1,35,855. किस तरह से लिखेंगे इसको? 135,855 in figure. So next number 7,27,000. किस तरह से लिखेंगे? 72700. Okay. Thereafter 4,25,300. So how will write it? 4,25,300. Okay. Then next number 9,09,099. So 90,90,99. Okay. Thereafter the next question 7,49,362. So 749,362. Then 8 lakhs. So 8,0,0,0,0 like this. Okay. So this is the number and how we write in figure. So this is the question number 2 for you. And this is on your screen. There is a third question of this exercise. Using the digit 0 to 9 only once, make the 5-6 digit numbers. ठीक है, ये आप अपने तौर पे कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, आप अपने तौर पे कर सकते हैं. 6,25,749, 6,25,749. Then 8,79,76543, 8,76,543. Thereafter the next question 9,08,765, 9,08,765. Okay, like this. Now we'll move for the next pointer, and that one is reading and writing of a 7-digit number. So here on your screen, here is a 1 lakh is a 6-digit number, and 10 times 1 lakh is 1 lakh is multiplied by 10, it will become 10 lakhs. Okay, like this. So 10 lakhs is a 7-digit number and it is read as 10 lakhs. Okay,
So on your screen, students, how when we add 1, so the greatest 6-digit number is 9,99,999. When we add 1 to this number, we get next number, which is 10 lakhs. Okay, on your screen there is a 10 lakhs, and how we'll get that? The procedure we already shown you on this slide. Okay, so 10 lakhs is a 7-digit number. To write this, one place to left of 1 lakh has to be introduced. Okay, so in this number 10 lakhs, the digit 1 is in the 10 lakhs place. Okay, so while reading a 7-digit number, first read the digit in the 10 lakhs and lakhs places together, and then read the rest of the 5-digit number. So hope students you will do as we directed you on this session. Okay, and now we'll move for the next exercise here, or next practice question here. So it is very interesting, students, and we'll get here how to make place value of numbers. Okay, so here is a question. Here's the point: the expanded form of numbers and place value of the digit. प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. ठीक है, अदाद की मकामी कीमत हमें यहाँ पर मालूम करना है. अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है. यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000 लैक्स है, 10 लैक्स है. ठीक है, दीज आर द प्लेस वैल्यू गिवन देयर. सो हियर इज अ नंबर गिवन फॉर यू. 33 lakhs 33,333 is the number given here, and we are supposed to give it a place value. ठीक है, so on your screen 3 in 1 unit, then tens, thereafter we'll move for the third step, and here is a hundreds place, thereafter the 1,000. So in the thousands place, and fourth one there is a 30,000. So 3 is in 10,000 place. Okay, thereafter the fifth position 30,000, 3 in the lakh place. Okay, thereafter there is a 7 place. You are looking here, 30,000. So this one is 7. Okay, so 1,000 place we are getting the 7 place. Okay, so here is a 10,000, 10 lakhs, sorry. So 3 in the 10 lakhs place. Okay, so how will read this number? 33 lakhs, then 33,333. Okay, and last one, this question is the last one question for you. So in this question, students, let us write the place value of the underlined digit of the number. So here's 5 is underlined, then 6 is underlined, then 25, then 8, 6, 2. 8 and 2, these are the underlined. So place value, we have to find out these place value. Okay, so the place value of the digit 5 is a 50 lakhs. Okay, 5 is in the 10 lakhs place. Okay, then the place value of digit 6,
So 6 is in the lakhs place. So what will be the value of this one? 6 lakhs. Okay. Then the place value of the digit 8. So 8 is in the hundreds place. Okay. What is the value for this one? 800. Okay. Then for last one, the place value of the 2. So 2 is in the unit place, so the value for 2 is only 2. So hope तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। Students, you will understand this number work of 6 digit and 7 digit. So do the exercise questions and best of luck for it.